They live very far. दूर रहते हैं, कनाडा के ही है लेकिन दूर रहते हैं. They live far away from me, like hours. ये जहाँ रहते हैं वहाँ से घंटों दूर रहते हैं. हाँ, टोरंटो में ही तो वो डायना भाई वगैरह 3-4-5 माता आत्मा हैं जिनका ग्रुप है, इधर आ भी चुके हैं. There is one brother, Danny, and they have around 4-5 souls in Canada. Where is Toronto. that? In Toronto. Toronto. Okay, that would be nice to have their numbers. Emails. उनका नंबर मिलेगा तो अच्छा रहेगा बोल रहे. ईमेल एड्रेसेस मिलेगा तो. That'd be great. आपका ईमेल से कनेक्शन है हेड ऑफिस से दिल्ली में? Do you have connection with the head office through your email? One Spirit, that one Spirit. A1 Spiritual. A1 Spiritual. Is that what it A1 is? Spiritual. Yeah, I thought it was. Yeah, I Did you do- contact that address? Yeah, That address? from the website. वेबसाइट से मिला बोल रहे हैं A1 Because Spiritual. I was contacting somebody here to make arrangements for हाँ me तो to come. So उनको आप कहेंगे कि हमें अमेरिका के कनाडा के सारे एड्रेस, अमेरिका कनाडा ब्राज़ील के सारे एड्रेसेस और फ़ोन नंबर हमें दीजिए तो आपको मिलेंगे. You ask in that email for the addresses of those souls in America, Brazil and Toronto, Brazil. in Canada. Yeah. Why Brazil? ब्राजील किस लिए बाबा पूछ रहे हैं? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है तो, दूर पड़ता है. South America. Yeah. फोन से तो कनेक्शन हो ही सकता है. You can call them up on phone. You can talk to them. Yeah. Yeah. So you can take their addresses through the email. You can ask for that. सब बिखरे हुए हैं वहाँ, मतलब कोई ऐसा भी नहीं निकल रहा है जो सबको संगठित करके रखे. Baba says that they're all distributed in different places. Yeah. So there is no one who has come up who could unite all of them together. Yeah, not yet. Soon. Yeah, because it's not that many in our part of the world. इतने नहीं है उस एरिया में, इतने नहीं है इसलिए. मंजू माता बिल्कुल उधर वेस्ट कनाडा में है. There is one Manju Mata. She's in West Canada. She stays in West Canada. Okay. I used to live there. I don't know. मैं पहले वहाँ रहती थी बोल रहे हैं. West Canada. वो भी बांधेली है. तो She's a bonded mother. She's in bondage. Yeah. अभी तो थोड़ा ढीले पड़े हैं कनेक्शन. अभी फोन दे देते हैं बात करने के लिए. Now they are बात ही किया. the family. Yeah. They have loosened her a bit. Oh, that's So they give her the connection. They give her Baba's phone if he rings up. Oh, nice. They can. ये They let her talk. Yeah. Oh, that's good. ये टोरंटो तो दक्षिण पूर्वी कनाडा में है. काफी दूर है वहाँ से, लेकिन इधर लोग ज्यादा निकले हैं कनाडा के. There are more people from Canada, but not many from the Southeast Canada, बाकी तो Southeast बिखरे part हुए of हैं Canada. अमेरिका में. So Baba is saying they're distributed in America in different places. Yeah. Yeah. All far दूर away. दूर दूर दूर. Far away from each other. Yeah. Well, we'll pass on the knowledge and we'll make more. बोल रहे हैं हम नॉलेज पास ऑन करेंगे, अगर नॉलेज देंगे तो और निकलेंगे. आपका जो समाधान करने का हो. If you have any questions to ask, you can ask. Okay. Tell them that the sisters were so, and yourself included, so amazing to. They really know the knowledge. So every time I'd write questions for Baba, they'd ask me if I had some. So I thought, we'll see if they can answer them, and they always did. They know the knowledge so well. It's amazing. Yeah. बोल रहे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर. बहनों को भी मैंने कुछ प्रश्न इनको उठता था तो बहनों को पूछते थे, तो बोल रहे बहनों के अंदर भी इतना ज्ञान है. वो लोग बहुत तो कुछ प्रश्न में जवाब दे दिया, लोगों ने जवाब दिया है. Yeah, it's true. So, because even this afternoon when we were sitting talking, it helped to clarify a lot of things. उससे मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब ऐसे ही मिल गए हैं बहनों के द्वारा. Okay. Remember the one that we were gonna ask about the. Did you give me? We didn't. We talked about the moon. Exactly what would happen with the moon. You want to ask Baba? Yeah, like what happens to the moon, because the moon is in the gold and silver age. So does it actually get hit by like an atomic bomb and it falls into the ocean, or what happens? बाबा वो पूछ रहे हैं कि जो चंद्रमा है सत्युग त्रेता में वो नहीं रहता है ना, उसको मैंने कैसे वो
वापस आ जाता है पृथ्वी में, उस क्या मतलब एटॉमिक बॉम्ब उसको क्लैश- लगता है क्या कुछ ये ऐसे? जो 9 ग्रह हैं वो सब आपस में क्लैश टकराते हैं, हम्म, और उनके टकराने की वजह से बैलेंस सबका बिगड़ जाता है। और जो उपग्रह चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ से पहले से ही आकर्षण में है, और बैलेंस बिगड़ने से फिर आगे अटैच हो जाता है। Baba says that the planets, the 9 planets, they clash. They have clash with each other. Okay. So because of that, the balance is disturbed, and the moon is already attracted by the earth because of the gravitational pull. It is Okay. already attracted by the earth. So when the balance is disturbed, it comes and merges. प्रशांत महासागर में आके जब अटैच होता है तो समुद्र का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। When it comes and attaches into the Pacific Ocean, the sea level rises a lot Oh, yeah, for sure. because of that. सारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, चाइना, अफ्रीका, यूरोपीय प्रदेश, ये सब समुद्र की गर्त में समा जाते हैं। And because of that, the continents like Africa, America, Australia, China, Europe, all these merge into the ocean, get submerged into the water. So in the first place, what causes the clash with the planets? Is it the bombs going off, or? पूछ रहे हैं कि जो नवग्रह टकराएंगे आपस में, तो वो किस कारण से होगा? क्या एटॉमिक विस्फोट से होगा या आपस में कैसे टकराएंगे? हाँ, ये पृथ्वी में जो एटॉमिक विस्फोट होता है उससे सारे ही पूरे वायुमंडल का, सूर्यमंडल, सौरमंडल का वो बिगड़ जाता है बैलेंस। Baba said that the atomic explosions that take place in the earth, that will disturb the balance of the whole solar system. Because of that, there will be clashing. बड़े-बड़े भूकंप आते हैं सारी पृथ्वी पे। There are very major earthquakes occurring in the earth. About you talked about the Pangea, the one landmass, and how I thought that perhaps the continental drift, those continents drift over towards, say, the landmass of India, and they connect because initially, or if you look at the edges of all of the continents, they could piece together like a puzzle. So this is what I learned from geography, right? So I just want to know if that was correct information from geography and how that would apply to the one landmass. वो पूछ रही है कि ज्योग्राफी में ऐसे सिखाते हैं कि जो भी कॉन्टिनेंट्स है, जो भी अलग अलग महाद्वीप है, वो आपस में एक माने उनका जो कोना रहता, जो साइड्स रहे, वो सारा आपस में ऐसे हैं कि जैसे सारे जुड़ के एक हो गए हो, ऐसे उनका बनावट है। तो पूछ रही है कि क्या वो सारे मिलके एक पूरा एक माने लैंड बनेंगे, या फिर वो कैसे? ज्योग्राफी में जो बताया जाता है जैसे कि वो सारे पहले एक ही थे, फिर वो अलग अलग एक दूसरे से दूर होते होते अलग हो गए। तो ज्योग्राफी में जो बताया जाता है वो ठीक है या फिर कैसे होता है, वो पूरा एक कैसे होता है फिर बाद में? वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया और ये चाइना और जापान और वो कनाडा का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो उसके बीच में है प्रशांत महासागर। वो प्रशांत महासागर भर जाता है गड्ढा, तो ये सब मिलकर के एक हो जाते हैं। बाकी ऐसे थोड़े कि ये अफ्रीका और अरब देश मिलकर के एक हो जाते हैं। मैंने वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए बात लागू हो सकती है कि वो मैंने नजदीक आकर जुड़ जाते हैं। हाँ जी, एक दूसरे से। हाँ जी, जब चंद्रमा से टकरा जाते हैं तब प्रशांत महासागर में जब चंद्रमा आकर के ऐड हो जाता है, हाँ, उस समय ऑस्ट्रेलिया है और ये पूर्वी द्वीप समूह है, चाइना है, जापान है, कनाडा का पश्चिमी क्षेत्र है, अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र है, वो सब मिलकर के एक हो जाते हैं। Baba says that when the moon comes and gets attached in the Pacific Ocean, that time whatever is taught in the geography, that can be told about Australia and the eastern islands and the western coast of America, Canada. About these areas, it can be told that those land masses come closer and then they become one. At that time, they become one. उस समय होता है क्या जब वो चंद्रमा आता है? जब चंद्रमा अटैच होता है पृथ्वी से, when the moon comes and attaches with the earth, at that time. So that like North America, South America,
connecting together, but what about connecting to India? Like, फिर इंडिया Because से कैसे कनेक्शन हो जाता है उनका? किसका? नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका वगैरह इंडिया के ये साथ चाइना- कैसे हो जाता चाइना और ये ऑस्ट्रेलिया जब उससे मिल गए तो ये सारा इंडिया तो एशिया के साथ मिला ही हुआ है. है? When China joins with Australia, then India is already in Asia, so it gets united there together. so in a sense, it is becoming one land now. तो ऐसे ही होता है क्या? मैंने चाइना और एक जापान land- तो ऑलरेडी मिले ही हुए हैं जैसे एशिया के साथ. China and Japan are already they are united with Asia. Yeah, Then Australia comes and adds up with that. yeah. पूर्वी द्वीप समूह से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक का हिस्सा भर जाता है, वो सब मिलकर के एक हो जाता है. The area between the eastern islands. लेकिन ये Up सब to पानी से Australia. भर जाते हैं, समुद्र के पानी से लबालब हो जाते हैं. नीचे चले जाते हैं पानी. हाँ, ये सब नीचे चले जाते हैं समुद्र के गर्त में. पानी का स्तर ऊपर आ जाता है. When the sea level rises, these islands they get submerged in water. Yeah. That time. Okay. But those lands they become one because it merges there. The moon comes and attaches there. So the land masses unite together. So that's the drift. But they are underwater. They're still underwater. एक तो पृथ्वी का नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो मीलों ऊंचे पहाड़ हैं बर्फ के, वो सारे पिघल के पहले ही आ जाते हैं एटॉमिक विस्फोट से, और इसमें सागर में मिल जाते हैं. तो समुद्र का स्तर पहले ही ऊंचा हो जाता है और फिर चंद्रमा के ऐड होने से और ज्यादा ऊंचा हो जाता है. Baba says that first thing is that the glaciers, the mountains of ice that is deposited in the North Pole and the South Pole, it melts. Because of its melting, the sea level rises. And then when the moon comes and attaches to the earth, it rises again, So that's what submerges them all. submerges them. But as they submerge, do they come in? So like I guess what I'm trying to get at is that at one point, do they kind of come around India so that everything, all continents are kind of, even though they're underneath, it still is one landmass. वो पूछ रहे बाबा कि जमीन के नीचे पानी के नीचे तो है सारे, लेकिन वो पूछ रहे क्या ऐसे होता है कि सारे आके इंडिया से जुड़ जाते हैं और एक लैंड जैसे हो जाता है? इंडिया से तो एशिया और चीन चाइना पहले ही मिले हुए हैं, लेकिन जापान का थोड़ा हिस्सा जो एशिया से अलग हो गया है, वो उसके चंद्रमा के ऐड होने से सब भर जाता है. Baba says that China and the part of Asia, all that is already united. They are joined with India, but the part of Japan which is not connected, even that will come and get connected because of the moon adding up, moon getting attached. पूर्वी द्वीप समूह जितना भी है, ये मलाया वर्मा के दक्षिण साइड में, वो तो उथला प्रदेश है प्रशांत महासागर में, वो ज्यादा पानी में गहरा नहीं है, तो वो तो वैसे ही ऊंचा है. वो ऑस्ट्रेलिया उससे मिलकर के एक हो जाती है. The eastern islands, the southeastern islands, Malaya, Burma, and all those islands, they are very superficial islands. They are not very deep. The Pacific Ocean is not very deep there. Yeah. So when they add up with Australia and they become one. There. Yeah. So that's sort of giving me that visual of that one landmass. वो सारा मिलके फिर एक लैंड मास एक माने वो समुद्र के अंदर वही पूछ रहे हो, समुद्र के अंदर भी एक हो जाते हैं समुद्र से ऊपर तो सिर्फ ये हिमालय और हिमालय के आसपास का प्रदेश रह जाएगा. जो the land mass is beneath water. Only the area between around in and around Himalayan region, only that will be above water. Okay. Good. That's a good answer. Kind of clarified. Clear हो गया. Okay. This one is kind of, I don't know if I would talk to you about it. Remember, he was talking about during the destruction and that, for those souls who weren't so close to India and need to be rescued. They were saying that, he comes with his helicopters. And I thought that's a long way from India to Canada with a helicopter. Are they coming up with something more turbo? Something more? Turbo, faster, up. Faster. I've heard that they actually have, the technology is there and it's begun to,
have I'm thinking it would be something like a helicopter where it goes above the stratosphere and then just sort of within, say you can get to India in 2 hours instead of like 20. वो बोल रहे बाबा कि जो बच्चे दूर दूर रहते हैं डिस्ट्रक्शन के समय, ऐसे सुना है कि हेलीकॉप्टर से उनको उठाया जाएगा। तो वो बोल रहे कि मैं तो सोच रही हूँ कि कनाडा तो इतना दूर है, तो हेलीकॉप्टर से भी फास्टर कोई ऐसा चीज़ निकलेगा क्या कि उनको ऐसे सुनने में भी आया कि ऐसा टेक्नोलॉजी है जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से थोड़ा ऊपर जाए और 2 घंटे में पहुंच जाए वहाँ पे तुरंत। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी निकला ऐसे सुनने में। बड़ा बात, दिन दूनी रात चौगुनी, साइंस तो बढ़ी रही। I was saying that every day by day, the technology in science is improving, right? Yeah. So they're doing it all for us. वो सारा हमारे लिए कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। Yeah. Okay, that's good. I don't know if this one question I had, because I know it should be geared more towards like the Merlis and that, but again maybe it's not important enough because I forgot it already. I wrote it down. Okay, there's a project that they've been working on in Switzerland. Again, it's science related, and they're trying to bring 2 atoms and run them around a track to bring them together to split the atoms to create the moment after the Big Bang. So it's like science, like the religious people don't want this to happen because they feel like they're trying to find God in science, and science wants to do it. So there's this clash between science and religion. But does he see that as sort of significant with the grand scheme of what's going on with the whole drama? Is there any relationship to that project? Because it's been going on for many years and they've spent billions of dollars doing it. And they're trying to find what they call the God particle. So it would open up a hole that would create a space or kind of lift the veil, the final veil. So that's why even some scientists are concerned that it would just sort of suck the whole Earth into this black hole. And I don't know if it relates at all in any way. वो पूछ रहे हो कि स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है, वो लोग 2 एटम को एक दूसरे से टकरा के कुछ ऐसा चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसे साइंस मानता है ना कि एक बिग बैंग होके सारा उत्पत्ति हुआ सृष्टि का, ऐसे मानते हैं वो साइंस में। तो वो उस क्षण में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि उस बिग बैंग से पहले कैसे था। तो 2 एटम को टकरा के एक दूसरे से वो लोग कुछ ऐसा पार्टिकल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे कुछ माने पता चले। तो वो बोल रहे हैं कि वहाँ के जो गांव वाले हैं वो सारे माने उसके अगेंस्ट है, वैसे कुछ प्रोजेक्ट करने के अगेंस्ट है। तो वो बोल रहे कि वो साइंटिस्ट ऐसे सोचते हैं, साइंटिस्ट भी ऐसे सोचते हैं कि अगर वो कुछ ऐसे करे और उससे ऐसे भी हो सकता है कि सारा कुछ जो पृथ्वी है, पूरा जो भी है यूनिवर्स में जो भी है वो सारा ही एक पूरा ही जैसे निगल गया हो, माने खत्म हो जाए, ऐसे कुछ हो सकता है। तो पूछ रहे कि ये प्रोजेक्ट जो हो रहा है उससे ये ब्रॉड ड्रामा में कुछ संबंध रखता है क्या, उससे कुछ ताल्लुक है ब्रॉड ड्रामा का कुछ ऐसे? ये सब अनुमान की बातें हैं, अनुमान के आधार पर नुकसान भी हो सकता है। All these are just hypotheses and they just do everything based on hypothesis. Yeah. So that can lead to damage or injury also. These hypotheses can lead to some destruction or some destruction. Bad It could be things, that. Yeah. Could be part of. It can be damaging. It can be damaging. Yeah, it's one of the. That's like I say, some scientists are opposed to it because they're concerned that it could create problems and what benefit is it going to be to mankind. But it's the same people who created the internet when they were doing it for the purposes they were doing it for. They didn't know that the end result would be that the internet is connected. So even though they don't really know what the benefit to mankind will be, they're still seeking this answer. वो भी वही बता रहे हो, उनको पता नहीं है कि ये मनुष्य को कैसे फायदा करेगा, बस वो लोग ऐसे ही ढूंढ रहे हैं जवाब। जो काम होता है उससे नुकसान ही हो जाता है। If they do it based on hypothesis, they're just guessing things and doing, so that can lead to damage, more damage. Yeah. I thought it just might open up and awaken people's consciousness, because if they find the answer to what ties things together, that's what they're looking for. They're trying to figure out what holds and binds the universe together.
So that's why they're It's doing time. it. Yeah. We'll let it go because it seems to be going off a bit. You know, I think I got the answer I needed from it. बोल रहे बाबा ठीक है उसको छोड़ देते हैं, वो तो हटकर चला जा रहा है, मुझे लगता है मुझे जवाब मिल गया जिस बात का मैं सोच रही थी जवाब. Yeah, it's enough that I think that it's a hypothesis, and I think that's what तो सिर्फ अनुमान है ना, इसलिए it's clear enough to me. Yeah. What else? मुझे क्लियर हो गया है, वो सिर्फ अनुमान है. वैसे भारतीय शास्त्रों में ये बात आई है कि वैज्ञानिकों ने अपने आप अपना कुल का विनाश कर लिया. Baba says that in the Indian scriptures this thing has been mentioned that the scientists they destroyed themselves Oh. through their inventions, you know. Oh, They destroyed wow. themselves. That's interesting. Eh? That's said in the scriptures. Yeah, it is there in the Indian scriptures. But could that be related to the atomic bombs because they're creating them? So they. उसका ताल्लुक तो एटॉमिक बॉम्ब से होगा ना बाबा, कि वो हाँ, एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं. हाँ, नहीं, हाँ, एटम बम की बात है और यादव आपस में लड़कर के खत्म हो गए. The Yadavas, that is the section of in the epic, it is written about the section of that. और उनकी विशेषता ये बताई कि बहुत शराब पीते थे और बहुत धनाढ्य थे, बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाले थे. It has been mentioned in the scriptures about those Yadavas. They are a group of people mentioned in the epic. Okay. It has been written about them that they were very wealthy. They had big buildings. They used to stay in big buildings and they used to drink a lot. So they have been described in this way in the scriptures. Okay. Okay. So they fought among themselves and Yeah. they perished. Oh wow. Okay. और Good. Acha. That's all I know. Acha. Okay. I guess just checking. I think. Okay, the last one. Maybe you can explain it to me because I haven't really got a clear answer yet, or it hasn't sunk. It hasn't hit me about how the. I think you talked about it, about the 40,000 years. How they determined that the. What was it? The Iron Age was. Iron Age was 40,000. Why was it? Where did they get that number from? उनको एक प्रश्न था बाबा कि जो शास्त्रों में जो बताते हैं ना कि कलयुग 40,000 वर्ष का है, तो वो बोल रहे वो 40,000 वर्ष जो नंबर है उनको मैंने किस हिसाब से उन्होंने वो डाला है, मैंने क्या ताल्लुक किस आधार से उन्होंने वो 40,000 लिखा और कुछ नहीं लिखा, मैंने 40,000 ही क्यों लिखा. उन्होंने देवताओं का एक दिन जो है वो सामान्य मनुष्यों के हजारों वर्षों के बराबर मान लिया है. They considered the 1 year of deities to be around thousands of years of a normal human being. 1 year of deities was considered to be equal to thousands of years of a normal human being. Why would they have considered that? क्यों ऐसे तो सोचा? मल्टीप्लाई कर दिया है उन्होंने. Because of that they have multiplied. Multiply कर दिया मैंने देवताओं के बाद. देवताओं का एक दिन जो है वो सामान्य मनुष्यों के हजारों वर्षों से कनेक्ट कर दिया है. One day of the deities was related to the thousands of years of a normal human being. They have ऐसा they have कुछ होता नहीं considered है. that. But what would make them think that? Like, ऐसा वो क्यों सोचते हैं, मैंने उनको क्या किस कारण से. शास्त्र को एक व्यक्ति के द्वारा थोड़ी लिखे गए. शास्त्र तो अनेकों लोगों के द्वारा लिखे गए, अनेक ऋषि मुनियों की रचना है. लेकिन कोई शास्त्र ऐसे भी हैं जिनमें ये भी स्पष्ट बताया गया है कि हर युग की आयु 12.5 वर्ष है. Baba said the scriptures were not written by one person. The scriptures were written by many saints and sages. They sat and they wrote the scriptures. But there are some scriptures which say that the for example, the golden age, one age is equal to 1250 years. 12,050. 1,250 years. so somebody got it right. किसी को तो सही मिला. It might have been. हाँ, एक तो शास्त्रों में ऐसे भी है In one or two कि हर युग की scriptures. आयु 1250 वर्ष है. In one or two scriptures, it has been written this way that each age is equal to 1,250 years. It must have been Baba wrote that scripture. बाबा ने लिखा होगा वो शास्त्र ना में. हमने लिखा नहीं. नहीं, बाबा ने लिखा होगा बोले. जो थीसिस लिखी गई ना, उस थीसिस में जो रिसर्च की है उसमें 1-2 शास्त्रों का हवाला दिया है
क्यों शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि एक युग की आयु 1250 वर्ष होती है, हर युग की आयु। Baba said the thesis that Baba worked on, Baba ka thesis, no? Yeah. The thesis that Baba worked on, in that he did research on different scriptures, and he found such scriptures also in which it has been written like that, that each age is equal to 1000 to 50 years. Right. Right. और उनका कहना था कि उस समय बाबा ने लिखा होगा ऐसे। हाँ, अनुमान लगाना चाहिए। Well, you told him that. I thought he wrote it. That scripture. He said you're guessing it. Okay. Gotcha. The next one was where in the Bible, because we were talking about that it's somewhere quoted in the Bible that Krishna ruled the golden age. Where would that be in the Bible? वो बोल रहे बाबा कि ऐसे बताते हैं ना कि बाइबल में कहीं बताया गया है कि लॉर्ड कृष्ण ने राज्य किया था 3000 वर्ष पहले, तो वो कहाँ पर बाइबल में लिखा है ऐसे कुछ भी? बाइबल तो हमें पढ़ी नहीं है, लेकिन जो बाइबल पढ़ने वाले हैं वो उसमें से खोज के निकाले कि ये बात कहाँ आई है कि लॉर्ड कृष्ण का वैकुंठ में राज्य था। बाबा से लॉर्ड कृष्ण तो कहते हैं, अंग्रेज लोग लॉर्ड कृष्ण का नाम तो लेते हैं। Baba says that those people who read the Bible, they should find out where it has been written exactly in the Bible. But the Christians, the English people, they take the name of Lord Krishna. They do take the name of Lord Krishna. The Christians. The Christians. In what reference? Like when how do they take the name? Like they कब लेते हैं कृष्ण का cited नाम? it somewhere in the Bible that. पूछ रहे बाबा कि कब लेते हैं वो ये नाम, माने कहीं बाइबल में लिखा गया हो या लॉर्ड कृष्ण का नाम तो आया होगा, लॉर्ड तो बाबा ने बोला है। The name of Lord Krishna might have come in the Bible. That's why Baba has mentioned it in the Murli. बाबा माने ब्रह्मा बाबा। Brahma Baba has mentioned. Brahma Baba उस समय मुरलियों में आया है। मुरली बोला। It has been said in the Murli. Yeah, I guess I just like to know where. मुरली में जानना चाहती हूँ कहाँ पर। वो रिसर्च करना पड़ेगा ना। We'll have to research on it. Where in the Bible is it? Yeah. Now going back, did he say it was in some Murli that it was said that it was in the Bible? Is that what Murli was that? मुरली में बोला। Murli, that was said, narrated through Brahma Baba. Yeah, That Murli it was. Yeah, but do we know exactly what Murli that was, so I could read that Murli to वो see? मुरली का डेट वगैरह पूछ रहे हैं, मैंने मैं पढ़ना चाहती हूँ। मिलेगा। आप यहाँ से ईमेल से पूछिएगा, वो मिलेगा। You'll get it through the email. ढेर वाक्य Ask for आए। it. Okay. You'll get it through the email. एक नहीं, ढेर वाक्य आए हैं। Many sentences have been mentioned regarding that. Yeah, because that's an important one. You can tell, like my son is Christian, and we've talked about the Bible, and he told me, my son told me that that they recognize the cycle as the golden, silver, bronze, and iron age, not the confluence. And that was an opportunity for me to invite him into learning a little more about the knowledge. That was great. So if I had another reference, then we could carry on. वो बोल रहे बाबा कि मेरा बेटा जो है वो क्रिश्चियनिटी को मानता है, तो उसने बताया कि ये जो गोल्डन एज, सिल्वर एज, ये जो सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है, इसके बारे में वो माने जानता है। उसमें उसके बारे में है, लेकिन संगम युग के बारे में नहीं है उसमें बात, और उसकी वजह से संगम युग के बारे में कहीं भी शास्त्रों में जिक्र नहीं है। About the confluence age, it is written nowhere in the scriptures. No, I know it wasn't. तो Yeah. इसलिए वो शास्त्रों में भी नहीं लिखा हुआ कहीं। It's not in the scriptures. तो इसलिए वो कह रहे बाबा कि अगर ये भी बात मिल जाए मुझे, तो मैंने उसी कारण से उसको ज्ञान सुनने के लिए किया। इसलिए नहीं है शास्त्रों में कि शास्त्रों में जो भी बातें आई हैं वो सारी संगम युग की ही बातें हैं। रामायण के अंदर जो लिखा हुआ है वो संगम युग की ही बातें हैं। देवासुर संग्राम की बातें जो भी लिखी हैं वो संगम युग की बातें हैं। महाभारत संग्राम की जो बात लिखी हुई है वो सारी संगम युग की बातें हैं। Baba said that the confluence age is not being mentioned in the scriptures because whatever has been written in the scriptures are about the confluence age itself. Whatever has been mentioned in Ramayana, in Mahabharata, or in the story of the fight between the devils and the demons and the deities, all these mentioned, whatever has been mentioned in it is from the confluence age itself. That's why they haven't mentioned the confluence age in the scriptures. Yeah, like I know that they didn't in the Bible. They didn't mention
the confluence age. It was just the 4 ages, but it was still a way into invite him into the knowledge. So I'm always looking for references to be able to say, well, look, because I always look for the similarities in what our beliefs are, and so that was why it was just important, and I just wanted to. वो बोल रहे बाबा कि ये जो 4 युगों के बारे में बात थी, तो उसकी वजह से मैंने उसको बुलाया ज्ञान सुनने के लिए। तो ये जो लॉर्ड कृष्ण की बात है, ये भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं उसको ऐसे ऐसे मैंने टैली करके कुछ कुछ बता सकती हूँ, तो वो मुझे मिल जाए तो मैं उसको और रेफरेंस दे सकती हूँ, उसका हवाला देकर बता सकती हूँ। बाइबल का अध्ययन आप खुद ही कर सकते हैं। You yourself can study the Bible. My son would love that. He'd be happy if I studied the Bible. बोल रहे मेरा बेटा को खुशी होगी अगर मैं बाइबल पढ़ूंगी तो। एडवांस ज्ञान से टैली कर सकते हैं। And you can tally it with the advanced knowledge. You can study the Bible and then tally it with the advanced knowledge. जब सरदार लोग एडवांस ज्ञान को सारा टैली कर रहे हैं, मुसलमान लोग टैली कर रहे हैं, हुसैन भाई ने कितना ज्ञान की ढेर सारी बातें टैली की हुई हैं, तो क्रिश्चियंस क्यों नहीं टैली कर सकते? Baba said when the Sikhs they can tally the advanced knowledge with their scriptures, the Muslims they also tally the advanced knowledge with the scriptures, with their scriptures. So then why can't the Christians tally them? There was one brother, Hussein Bhai Baba took the name. He has tallied the Islam, the scriptures and the Muslim religion with the advanced knowledge. So then he says, why can't the Christians tally it? Even they can. Yeah, that's interesting. Who knows? That's the Pope. That's the Pope. Pope से पूछना पड़ेगा. Yeah, go there next. Go ask the Pope. That's good. Okay, we were talking about when Brahma Baba had the sisters then, and they went into trance, and they went and they danced. And you said there's no subtle realm, but then where did they dance, right? बाबा उनका प्रश्न है कि उस समय जब ब्रह्मा बाबा थे, तो आदि में वो जो बहनें थे वो सारे ध्यान में जाती थी, तो वहाँ नाचती थी, रास करती थी। तो अब बताया जाता है कि सूक्ष्म वतन तो है नहीं, तो फिर वो कहाँ पर नाचती थी, कहाँ पर रास करती थी? जैसे स्वप्न होता है ऐसे ही उनका साक्षात्कार होता है। बाबा said just like the dreams they have visions. And where's is there, like when you have dreams, where's that? Just the subconscious, and so that's the dance was in the subconscious mind of feeling ecstatic. वो पूछ रहे बाबा कि जब हम सपने देखते हैं तो हम कहाँ रहते हैं, माने वो क्या अंतर्मन की बात है? अंतर्मन की बात है। अंतर्मन की बात, yeah, it is about the subconscious mind. So perhaps it was the vision of themselves dancing in a memory of them dancing in the golden age. माने उनका क्या वो साक्षात्कार हुआ उनको कि वो सतयुग में जो नाचे होंगे, तो उसका साक्षात्कार उनको वो याद उनको आया उनके अंतर्मन में, वही है क्या? Yeah. So it is somewhere. It's not like they were in the subtle realm. They were in a memory of the past in the subconscious. माने वो पूछ रहे बाबा कि इसका मतलब वो सूक्ष्म वतन में नहीं थे, लेकिन उनका जो पुराना याद, उनको वो याद के कारण वो अपने अंतर्मन में वैसे नाचने लगी। साक्षात्कार कराना ये तो गॉडफादर का काम है ना। स्वप्न होते हैं अपने संकल्पों के आधार पर। जैसे जैसे संकल्प करता है आदमी, जैसे जैसे कर्म करता है, वैसे स्वप्न देखता है। लेकिन साक्षात्कार जो है वो तो गॉडफादर कराते हैं। The visions they are caused by the Godfather, God the Father. He causes the visions, but the dreams they are caused because of our own thoughts and the work we do, the actions that we carry out, and the thoughts that go through our mind. Because of that we have the dreams, but the visions are caused by God the Father. Like the visions that Brahma Baba had. That was. जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए तो शिव बाबा ने उनको साक्षात्कार कराए। शिव बाबा caused those visions to Brahma Baba. So how do you know the difference if it's your own subconscious or if it's God giving you visions? कैसे पता चलेगा, अंतर कैसे पता चलेगा अगर हमको गॉडफादर साक्षात्कार करा रहा है या हमारा ही अंतर्मन के द्वारा हम ऐसे देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा अंतर? अंतर्मन में वो बात है ही नहीं तो देखेगा कहाँ से? If it is not in your subconscious mind at all, then how will you see those things? Well, like you said, if God gives you a vision.
अगर भगवान हमको साक्षात्कार कराता है हाँ तब वो दिखाई पड़ता है. हाँ जी. Yeah, when God gives you visions, then you see those things, which is not there in your subconscious. मुरली में तो आता है साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में रहती है, मैं किसी को देता नहीं हूँ. It is said in the Murli that the key to visions is with me. I don't give it to anybody. Baba has said in the Murli. So the only person who's really had a vision is Brahma Baba? तो क्या सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही साक्षात्कार हुए? क्यों? और दूसरी बहनों को भी हुए, अभी भी हो रहे हैं. Even the other sisters have had, even they're having it now also. अंत में और ज्यादा होंगे. It will happen. It will increase in the end. The visions, it will increase in the end. There will be more people having visions. Okay. I'm open. मैं खुली हूँ उसके लिए. हम लोग जरूर नहीं. It's जो not बुद्धिवादी लोग होते हैं उनको साक्षात्कारों की दरकार नहीं है, उनको विश्वास भी नहीं होता उनको. The people who are intelligent, they don't need visions and they don't believe in them too. Well, I believe in visions, so I guess I'm not intelligent. जो विजन देखने वाले हैं वो सभी छोड़ते जा रहे हैं. Those who, वो प्रैक्टिकल में इस दुनिया का परिवर्तन देख नहीं पाएंगे. Baba says that those who see visions, those who have visions, they are leaving their bodies. They will not see the practically through their bodies. They will not see the transformation of this world. इन आंखों से नहीं देख सकेंगे. Through these eyes, they cannot see through their own eyes. बाबा कह रहे थे कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद मैं विश्वास करती हूँ साक्षात्कारों के ऊपर. साक्षात्कार करना तो बुद्धू बनने की निशानी है. बाबा बुद्धू देवताओं को साक्षात्कार होते हैं, देव आत्माओं को. Baba says that the having visions is it's a sign of dull-headedness. The deities they have that dull head, so that's why they have visions. Deities. Well, we're going to be deities, aren't we? We'll be deities too, won't we? हम भी देवता बनेंगे. So we'll be deities. हम भी तो देवता बनेंगे. उनमें हमें अंतर है. वो जीते जी नहीं देवता बनते हैं और हम जीते जी देवता बनते हैं. They don't become deities through this life, through this body, while living in this body, but we become deities through this body itself. Okay. That is the difference between us and them. Okay. Yeah. डायरेक्ट नर से नारायण बनने का हमारा लक्ष्य है. उनका डायरेक्ट नर से नारायण बनने का लक्ष्य नहीं है. उनका नर से प्रिंस बनेंगे, बच्चे के रूप में जन्म लेंगे, फिर बड़े होकर के नारायण बनेंगे, नारायण जैसे बनेंगे. Our aim is to become Narayan directly. नर टू नारायण डायरेक्ट. Directly from a man, we will become Narayan. Nar, that is man. Directly from man, we will become Narayan. But their aim is not to become directly from Nar. They won't become Narayan, but they will take birth as a prince, and then they will become Narayan. Okay. So in this life, would they be kind of dull? तो क्या इस जीवन में उनका बुद्धि not in a negative way, but just less intelligent, let's say. माने इसका मतलब इस जन्म में वो कम बुद्धि वाले होंगे, ज्यादा. इस जन्म में भी कम बुद्धि वाले, तो वहाँ तो सब होते हैं कम बुद्धि वाले देवता. In this birth they are less intelligent, and in the golden age the deities are anyway they are. हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम भी कम बुद्धि वाले होंगे. When we reach there, when we go to the golden age, even we will become less intelligent. Yeah. We don't need the intelligence. But that's the one thing we don't want to discuss with BKs when they get together, right? They might take offense. बोल रहे बाबा, तब तो हमको इंटेलिजेंस की माने बुद्धिमानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो और ये एक बात है जो हम बीके से डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग उसको गलत समझ लेते हैं. It won't unite them. Anyways, this is more practical with the. We were talking about the reading the Murlis and then how I walk with it. So it's okay if I read the Murli in the morning and then I download it to my MP3, which I was doing, and walk, and then maybe read that Murli again. पापा वो एक प्रश्न पूछ रहे थे कि वो सुबह जो मुरली सुनती है तो उसी मुरली को जब वो ऑफिस में जाती है तो MP3 में डाल के जाते समय रास्ते में सुनते हुए जाती है. तो ये ठीक मैं कर सकती हूँ क्या? ऐसे दोबारा जब सुनती हूँ तो ऐसे चलते चलते मैं सुन के जाती हूँ. तो कौन सी मुरली? जो मुरली है वो सुन. Which मुरलीज are you listening to? The ones that are online. इंटरनेट में जो मिलता है, जो मुरलियाँ बाबा की जो क्लैरिफिकेशन मुरलियाँ हैं, क्लैरिफिकेशन वर्ड्स है. हाँ,
बाबा की जो क्लैरिफिकेशन मुरलियां है हाँ, वो जो पहले एक बार सुनती है हाँ, घर में, हाँ। फिर जब ऑफिस जाती है तो MP3 में डाल के वो हाँ। रास्ते में सुनते हुए जाती है। हाँ, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना कुछ नहीं। हाँ। ये मुरली को तो बाबा ने कहा एक मुरली को 6 बार सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी। Baba said that you can do like that. Baba has told in the Murli that you have to read or listen to the Murli 6 times. Yeah. Only then it will enter your intellect. Yeah, well, that's what I figured though. If I'm walking with it, if I've already read it once, and I've written down my Murli points, it's starting to sink, and then that's just the time where I'm walking, and I'm not thinking, I'm just walking, and there's no distraction, so it's another opportunity for me, because, I still live in the Lokik world, and it's... वो बोल रहे बाबा कि पहले तो मैंने उसको सुन लिया है, सुन के मैंने अपना पॉइंट भी नोट कर लिया है, लेकिन दोबारा जब मैं सुनती हूँ तो मुझे एक मौका मिलता है कि दोबारा उसको सुनूं और मेरी बुद्धि डाइवर्ट भी नहीं होती है, क्योंकि मैं तो लौकिक में रहती हूँ, लौकिक दुनिया में रहने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैं सुन सकती हूँ। क्योंकि कुछ बहनों ने उनको ऐसे कहा कि बाबा ने बोला है कि दूसरा काम करते हुए एक बार मुरली जो सुनना है अमृत वेले, उसमें कोई धंधा धूरी न करते हुए ध्यान से सिर्फ मुरली सुनना है। बाबा said at least once. बाकी सारा दिन अपना रिवाइज करते रहे, काम करते रहे। Baba said that once in the day or in the Amrit Vela, you have to listen to the Murli without doing anything else. Yeah, yeah. You just have to concentrate on the Murli. Yeah. And after that, you can revise it. Do your work and revise. As I'm walking, because that's where I love just to nobody's bothering me when I'm walking, and I can concentrate more. सूर्य में चलते समय कोई मुझे तंग भी नहीं करेंगे, कोई मुझे डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, तो मैं कंसंट्रेट कर सकती हूँ मुरली। And nobody's bothering me. Yeah. Well, that's good. I'm happy. खुश हुई। Yeah. I think that's all my questions, basic questions, aside from any personal ones. I think that's pretty much covered everything for now. I'm sure I'll have many more, but right now I'm content. बोल रहे मैं संतुष्ट हो गई हूँ और मेरे प्रश्न नहीं है। और जैसे आगे चल के बढ़ते रहेंगे तब गहराई में उतरने के बाद फिर प्रश्न फिर शुरू होते हैं। I said when you will go deeper into the knowledge, more questions will come. I know. Yeah. First and last. First and last. जो आदि में होता है वो अंत में भी आता है। विस्तार रूप में आता है। Whatever happens in the beginning will happen in the end in a more wider form. Yeah. So as you go deeper, you'll have more questions coming. Yeah, I know. एडवांस में 77, 78, 81, 82, 90 तक कोई प्रश्न नहीं करता था। In advance, in 76, 78, 90, until 90, nobody used to ask questions in the advance. जो सुनाओ वो ठीक। Whatever Baba used to narrate, that they were satisfied. That is correct. Oh wow. Yeah. बाद में प्रश्न उठने लगे। Later on, the questions arose. They started arising. Yeah. That's good. But I mean, I guess the questions only stop once we're in the golden age. We'll right up until the very end, even that probably last minute. सत्युग में जाने के बाद ये प्रश्न खत्म होंगे लगभग। Yeah, right till the very end. Yeah. Wow. This is gonna be busy. रावण खत्म हो जाएगा तो प्रश्न खत्म हो जाएंगे। Ravan himself will finish, so the questions also will finish. Yeah. रावण के अनेक सिर, माने अनेक प्रश्न, अनेक प्रकार की मेंटलिटी। Ravan has many heads. Ravan is shown to have many heads, so that means he has many questions, many kinds of mentalities. सर कटते जाते हैं रावण के, नए सर उठते जाते हैं। When one head is cut off, a new head arises. Yeah. New head comes up. पुराना प्रश्न खत्म हुआ, नया प्रश्न शुरू हुआ। Old question was finished, was solved, and a new question arose. Yeah, it doesn't end. खत्म ही नहीं होता है। But then because the main point of everything is to connect to the point through remembrance. And so sometimes, like I said, I was sitting in the meditation hall today, and I was just getting I was churning and churning and churning, and it was just I just wanted to stop churning. And I thought, why do I need to churn anymore when I know the point of the whole
process is just to connect to the point. So why do I have to keep turning? Because I know that is it just to really keep the mind occupied? Because we already know the point is to connect to the point. वो बोल रहे बाबा कि जब मैं याद में बैठी थी आज क्लास में तो बहुत मंथन चला, मंथन करते 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 एक ऐसे टाइम आया जब मुझे लगा कि मुझे मंथन करना नहीं चाहिए, मुझे मंथन करने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे पता चला है कि वो तो सिर्फ एक बिंदु से मुझे कनेक्ट करना है, जब सिर्फ इतनी सी ही बात है, फिर वो सारा ही मंथन करने की क्या ज़रूरत है। एक ऐसे समय भी आया था। हाँ, तो वो एक बिंदी ढूंढनी पड़े ना, कौन सी बिंदी से कनेक्ट करना है। Baba is telling that the point which you have to connect to, you have to search for that point. Which is that point you have to connect? Which is that point? Which is that one point you have to connect yourself No, to? point नहीं। Right. हाँ, एक point. point means Shiva. Yeah. Point means Shiva. Point means Shiv. हाँ, Right. Shiv Right. is the point. Right. So I know that's what I have to do. So sometimes it's almost like the churning gets in the way because I know what I have to do is connect to the point. So why do I have to keep thinking? Is that just probably to keep me focused? Sometimes it's like, okay, I know I have to connect to the point. I know I have to connect with Shiv. So why do I have to churn this all? There's so much knowledge. वो बोल रहे जब मुझे पता चला है कि मुझे शिव से ही कनेक्ट करना है अपने को, तो फिर ये सारा ज्ञान का मंथन करने की क्या जरूरत है? क्या सिर्फ अपने दिमाग को बिजी रखने के लिए मंथन करना है क्या? कुछ नहीं, ऐसे मुझे लगता है कभी कभी। अपने अनेक जन्मों को जानने के लिए मंथन करना है। Baba says you have to do the churning in order to know your different births, the different births. और हमारे जन्म से कनेक्टेड और जो दूसरे लोग हैं संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाले, उनकी भी जानकारी हमें करनी है। We have to do the churning so that we can know our births as well as connected with our births, we can know the births of the different souls that are connected to us. So that is the reason you have to do the churning. Right. Just to satisfy that within us, just to feel satisfied that we know. Just I guess that brings contentment once you know. I guess that's really what it is. मैंने वो बोल रहे कि वो संतुष्टि पाने के लिए हम मंथन करते हैं कि We are actors. जहाँ एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को अपनी पूरी एक्टिविटी का पता होना चाहिए ना, पूरे पार्ट का ये ज्ञान होना चाहिए ना। Baba says when we are actors, so the actors should know the whole activity that they do, the whole part that they play. They should know about it, Yeah. don't they? Yeah. True. That's true. तो सेटिंग करना पड़े। For that we'll have to do the churning. And we'll know at the very end all the parts. तो अंत में हमको सभी सारा पार्ट का पता चल जाए, But not before. उसके पहले नहीं। अभी उतना अब निश्चय उठता है, बैठता है, निश्चय बैठाने वाले निश्चय बैठाते हैं, निश्चय उखाड़ने वाले निश्चय उखाड़ देते हैं। राम संप्रदाय हमको पॉइंट से कनेक्ट कराते हैं, रावण संप्रदाय डिस्कनेक्ट करा देता है। Baba says now the condition is that sometimes we have faith, then we lose faith again. The people who bring you back into faith, they try to bring back, and those people who try to make you lose your faith, they keep trying that way. And the community of Ram, they connect you to the point, and the community of Ravan, they take you away from that. So I It's guess happening now. By knowing your part, you have that faith that no matter what they say, you know your part. They can't convince you otherwise. So I guess that's why that sort of answers the question to myself. तो कुछ रहा कि अगर हमको अपने पार्ट का पता चल जाए तो फिर हमको कोई दूसरा हमको अपने पार्ट का पता तब चलेगा जब हमको अपने पहले बाप असली बाप का पता चले। Baba says that we will know our part only when we know our real father, who our real father is. हम कौन से बाप से कनेक्टेड हैं? To which father are we connected? Who is the father we are connected to? सुप्रीम सोल और चंद्रवंशी फादर ब्रह्मा और इब्राहिम और आफ्टर क्राइस्ट
और आफ्टर बुद्ध किसके पीछे हम जुड़े हुए हैं? To whom are we connected to? Is it the Supreme Soul, or is it the father of the Moon Dynasty, Brahma, or is it Abraham, or is it Buddha, or is it Christ? Whom are we connected to? We should know that. Yeah, we've been around, so we're back to where we started. To know who it is. Yeah. Okay. Have any more questions? I mean, I think we've covered. Oh, Yeah, it's, like I said, प्रश्न तो हो गए बोल रहे हैं. if we read another Murli, I'll have a whole bunch more. मैं मुरली पढ़ूंगी तब मुझे और प्रश्न उठेंगे, उठ सकते हैं ऐसे. अभी तो नहीं है. अभी बीके वालों को आपके एडवांस में आने का पता लग गया है? Have the BKs come to know that you are in the advanced knowledge? Not yet, but possibly. They had the BKs came to the studio I have, and they taught about 6 sessions, and then they drifted away. They didn't want to do it anymore for whatever. Have they come reasons. to know that you are in the advanced knowledge? I don't think so. I think मुझे नहीं लगता I उनको don't पता think चला so. है. But possibly just one of them knows now because I emailed out to my email list. She was on it that I'm going away to India and don't send me emails right now. So I had a big list and she was in किसी there. एक को पता चला होगा. एक बीके थी जो मेरे ईमेल लिस्ट में थी. उनको मैंने बताया था कि मैं भारत जा रही हूँ, मुझे अभी ईमेल नहीं करिएगा. Yeah, so तो उसको पता चल गया होगा. She probably knows. हो सकता है. But I didn't, because when I did mention to her at one point, I mentioned about when I was on the site and I was looking at the information, I had asked her about it. I said, so then tell me what you know about it. And she was not very happy that I was on the site. And so I thought she's not happy, I'm not going to talk about it anymore. So I didn't even tell her it was coming, even though. बोल रहे बाबा कि जब वो वेबसाइट में देख रही थी एडवांस ज्ञान के बारे में, तब उन्होंने पूछा था उसको कि ये सारा मैंने देखा है, तो कुछ बता सकते हैं क्या उसके बारे में कुछ. तो उसको वो खुश नहीं थी कि ये वो सारा पता चल गया, इसको ये सारा जान गई. तो जब वो खुश नहीं थी तो इनको लगा कि मुझे बताना नहीं चाहिए, तो इन्होंने उसके आगे कुछ नहीं बताया फिर, और उसको बताया नहीं कि वो सारा कर रही है जो यहाँ जा रही है करने के लिए. But you know what, I really think मैंने उसको शक हुआ. I think she had a doubt. she had a doubt. Yeah, she has her doubts. But in all honesty, I see when I know that she is limited in what she's believing. Like, she's a churner. And I know when I ask her certain questions, she can't give me answers. And she goes, well, I don't know that. You know, but I think her intelligence is there. I know that if she moved past it, I know she would love, I just know she would love the advanced knowledge. Just बोल रहे बाबा कि knowing her. वो मंथन करने वाली टाइप की है, तो थोड़ा बुद्धिवादी भी है, तो मुझे लग रहा है कि उसको तो एडवांस नॉलेज बहुत पसंद आएगा. Yeah. ऐसा So मुझे लग रहा I'll है. wait for her to call me. And then she asked me. बोल then रहे I'll वो tell her. जब वो मुझे फोन करेगी ना, उसका मैं इंतजार करूंगी. अगर वो पूछेगी तो मैं कुछ बताऊंगी. And I'll be more than happy to tell her, you know. And so we'll see what happens if it's meant. मुझे भी बहुत खुशी होगी उसको बताने के लिए. फिर देखते हैं क्या होगा फिर उसके बाद. Yeah, I'd be happy for her to come, and I think she gains so much from it because she has a good foundation. You know, really good. Since She's been in the knowledge probably 20 years or so too. वो भी लगभग 20 साल से ज्ञान में रह रही है. She had a Gita Pachala in her house. And, गीता पाठशाला. yeah, in her house. उनके घर में गीता पाठशाला है. तो Yeah. So there's many people. I think, you know, I'd love to tell, but we'll see. We'll see how well I can teach it. बोल रहे हो बहुत लोग हैं जिनको मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन वो लोग कैसे ग्रहण करते हैं देखना पड़ेगा. So he has to help. बाबा मुझे हेल्प करेंगे. शंकर का नाम पहले पहले मत सुनाइए. बाबा says don't take the name of Shankar in the beginning. Okay. शंकर का नाम लेते ही शंकर पार्टी शुरू. Because if you take the name of Shankar, they will think that you have gone to the Shankar party. Oh. They will have that. आपका डिपार्चर 3 सुबह को है. You are departing at 3 o'clock in the morning. Departure time. 20 hours on. Yeah, Would it- 20 hours. बोल रहे बाबा 20 घंटा जर्नी है लग रहा है. So I'm hoping I can say. कहीं ठहरना होगा ना बीच में. You will have to stop somewhere in between. No, this is नहीं. direct. पूरा Yeah. डायरेक्ट प्लेन. अरे? 20 घंटा. 20 घंटा बैठने का. Yeah. वही बोल रहे थे बहुत लंबा जर्नी हो गया.
आते समय वो कहीं रुक के आई थी बीच में ब्राजील में while coming you stopped at Brazil. Brussels. So that was 8 hours, and then 8 hours later, Brussels. 16. और स्लीपर नहीं निकला है जहाज में, जैसे बसों में स्लीपर बस होती है. Isn't there a sleeper in the? I'm hoping to manifest one. If you can help, that'd be great. You know. बोल रहे वो ऐसे बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, बाबा हेल्प करेंगे. No, वो बोल रही थी बाबा. because sometimes they overbook, especially this time of the year. They overbook the seats. So if he can do anything. फर्स्ट क्लास वाले कभी कभी ओवर बुक कर देते हैं, Yeah. तो कभी कभी खाली रहता है, तो मुझे वहाँ जाके सोने को मिलेगा. Please. तो बोल रहे मैं कब से उसका संकल्प कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए एक सीट वहाँ पे आगे. You can do that for me. I'll come back. बोल रहे बाबा मेरे लिए ऐसे करेंगे, वापस भी आ जैसे जाऊँ. कुर्सी होती है ना, वॉल्वो बसें होती है ना, तो ऐसी ऐसी कुर्सी होती है, ऐसी ऐसी. हाँ बाबा वो बता रही थी. वो लेटे लेटे जैसे ऐसे है, लेटे वहीं पे लेटे रहे, चित्त हो जाए, लौट इधर लौट जाए, उधर लौट जाए, और उसके पीछे ऐसी कुर्सी दूसरी घुसी हुई है. First class. ऐसे ऐसे. बोल रहे बाबा फर्स्ट क्लास में ऐसे First सीट्स class. है, हाँ. और इनका फर्स्ट क्लास नहीं है, लेकिन वो बोल रही है कि कभी कभी वो लोग ज्यादा बुक कर देते हैं, हाँ. तो नहीं आते हैं, हाँ. मैंने खाली रहते हैं, हाँ. तो उनको जाके वहाँ सोने को मिलता है. बोल रहे ऐसे वाला मुझे एक सीट मिल जाएगा, मैं ऐसे संकल्प कर रही हूँ बाबा मुझे मदद करेंगे ना, मैं वापस आ जाऊंगी. बोल रहे हाँ जी. Taste a bit of the golden age on my way back. Taste a bit of the golden age on my way back. Just lie back, बोल रहे relax. वापस जाते समय थोड़ा सा सत्युग का सुख मिल जाए. Comfort. Yeah, so it's gonna be a long way, long flight. That's why it's hard to come back and forth. You know. घंटा बहुत लंबा होता है. इसलिए आना जाना बहुत मुश्किल है. बोल रहे हाँ. लंबा जर्नी होता है. बीच में एक हाल्ट होना जरूरी होता है, थकान हो जाती है बैठे बैठे. Baba says that you feel very tired sitting on the way back, Yeah. so you should have a stop in between. So. Yeah, I know it's very. I couldn't believe it when they said it was non-stop. But I was supposed to have been able to stay a little longer, 4 days longer. But the flight got all mixed up, so that would have been a stopover flight too on the way back. Just didn't work out. I was meant to do it this way. बोल रहे 4 दिन और रहने का कुछ प्लान था इनका, अगर वैसा होता तो उनको वो स्टॉप वाला फ्लाइट मिल जाता, लेकिन ऐसे हो नहीं पाया, कुछ ऐसे काम प्रॉब्लम लग गया. Is it because you had some work there back at home? No, when I booked the flight, the lady told me to go and get a visa before I paid for the flight. So by the time the visa came, that flight was gone. So when she tried to get the return flight, it was getting 2-3 weeks later. All the seats were taken. अच्छा, So- वो बोल रहे कि वीसा के लिए उनको इंतजार करना पड़ा, और तब तक वो फ्लाइट सारा बुक हो गया था, तो रिटर्न टिकट में उनको मिला नहीं फ्लाइट. I mean, I should have just gone ahead and booked it or bought it, because what were the chances of them denying me a visa? I mean, I don't have a record or anything, so I should have been able to have gotten it. But I didn't. This was my first experience, so now I know better. You know? बोल रहे बाबा कुछ ऐसे, मैंने वो जाके अगर वीसा के लिए इंतजार नहीं करती, अगर जाके बुक कर देती तो मिल जाता, लेकिन ये फर्स्ट टाइम उनका अनुभव था ये, तो आगे के लिए Yeah. Now I know pro. I know how to do it अनुभव now. होगा. Won't be hard next time. वो एक और प्रश्न पूछे थे कि जो विनाश के टाइम में जो आइस जम जाता है अलग अलग जगह में, हाँ. तो वो पूछ रहे थे कि जब एटॉमिक विस्फोट होता है, अलग अलग जगह नहीं, सारी एक साथ- पृथ्वी पर ही जम जाता है. वही प्रश्न था बाबा का कि अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे होता है, एक साथ सभी जगह पे बर्फ जम एक साथ सभी जगह विस्फोट होंगे, जो सारी दुनिया भूकंप विस्फोट ही विस्फोट हो जाएंगे. एक साथ ही हो जाता है. हाँ, You were asking about those rains and freezing in पृथ्वी का different पूरा ही places. बैलेंस बिगड़ जाएगा. Yeah. Baba said that it takes place all at a time. The All at the same time. rains, yeah, the rains pouring down, the atomic explosions, and the earthquakes. All this happens at the Oh. same time in all the places. At the पूरे end, सागर का there is- पानी ही बॉइल्ड होने लगेगा. The water in the ocean will start boiling because Yeah. of the heat. So that would be the final destruction. भाप उठ के सारी ऊपर जाएगी. The vapor will rise up. The water will evaporate up. Wow. कई दिनों तक मूसलाधार बरसात
There will be torrential rains for many days. after that. But by then people will have left उससे the सारी planet. दुनिया ही फ्रीज हो जाएगी. Then the whole world will be freeze. Yeah. I don't want to be here after that. Too cold. I couldn't even handle the cold here. बोल रहे बाबा बहुत ठंडी होगी ना, मैं तो सहन नहीं कर पाऊंगी इतना ठंडी. Cold. आत्मा उड़ जाएगी ऊपर. The soul will go up. The Yeah, soul good. will rise above. That's good. Yeah, I don't want to be cold. I don't like being cold. मुझे ठंडी पसंद नहीं. वो पता नहीं थी बाबा उधर ही कि उनको ज्यादा ठंडी लग रही है यहाँ पे. Still, I'm going back to minus 20, you know. I'm going back to minus 20 degrees now. Back home. It's वहाँ cold. पर -20 डिग्रीज है बोल रहे हैं घर पे जहाँ पे जा रहे हैं लोग. -20 डिग्रीज. फिर यहाँ तो उतनी नहीं है सर्दी. Yeah. Here it's not that cold now. It's warmed up a bit. I haven't looked at the temperature. I've been away, but when I left, for about the first week when I left, it was minus 20. When I left, I said, जब वो आई थी तब वहाँ पर -20 डिग्रीज था कहाँ? कनाडा में. yeah, it's bitter. ना तो उतना सर्दी यहाँ तो नहीं होती है. It's not so cold here. No. It never gets that cold here. But I felt chilled. It felt chilled. I don't know why. I लेकिन just, मुझे बहुत ठंडी लगी, पता नहीं क्यों it's just a लगी. little chilled. That's what Really? wrestling. फरुखाबाद. Where in फरुखाबाद और in दिल्ली? More in Delhi. Yeah. दिल्ली में ज्यादा Yeah, ठंडी. it was Delhi, cold. It was cold. I washed my hair and then I got chilled inside and I couldn't warm back up. मैंने वो अंदर से ठंडी हो गई उनको ऐसे. दिल्ली खुला हुआ है ना. विजय विहार की जो बिल्डिंग है वो जैसे खुली हुई बिल्डिंग है. ऊपर रखा गया होगा. हाँ, okay. The building is open, more open in Delhi Yeah. That's why it's yeah, really cold. I guess that's it. compared to Furkabad. Yeah. You know, I was supposed to. I had left I came with a friend. I told you, and I left the plan for that first week with her. Whatever she wanted me to do and go, I do. And we were gonna. The plan was she was gonna take me up to Mount Abu, right? But it never worked out. You know. So I guess it's not meant for me to see it. She was planning to take the She wanted to take me up there, but I just said to her, whatever, you know. But it wasn't meant to, I guess. You know. ये जब आई थी ना बाबा तो कोई फ्रेंड के साथ आई थी और उनके घर में रही वो सूरत में. तो बोल रहे थे कि वो फ्रेंड उनको हफ्ता वहाँ रुकवाई थी घर पे, तो वो माउंट आबू ले जाना चाहती थी उनको, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. मैंने ड्रामा शायद ऐसे था नहीं, तो मैं गई नहीं वहाँ से देखना नहीं. अभी तक माउंट आबू गए नहीं कभी. You haven't been to Mount Abu before? And I don't know if is it necessary. कभी गए ही नहीं. In these 20 years in basic knowledge, you haven't been to Mount Abu even. No, and I don't. You know, I'd like to see it, but it's. I figure I'll eventually get there, so it's a rush, you know. ये भी एक खास आकर्षण कहेंगे ना. 20 साल तक कोई आकर्षण नहीं है माउंट आबू जाने वो तो इतना का. है, और अभी इतना एडवांस है। में आने के बाद एक साल के अंदर आ गए. How long have you been in advanced knowledge? Well, I started researching a couple of years ago, and then I, was looking at it, and then. वो 2-3 साल से ही मैं थोड़ा करके रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो धीरे करके, लेकिन उनको कोई कनेक्शन नहीं मिला उस समय. तो अभी उनको कनेक्शन मिला. When did you get connected to George, brother? Probably at that time. When? How A long? couple of years ago when I was researching it. Yeah. Couple of years means how many years back? Probably 2 years. 2 years. maybe. लगभग 2 साल से A couple of years. वो जॉर्ज भाई से भी कनेक्शन हुआ, ज्ञान ले थे. But I would stay up a lot, like late into the night. If you're reading. I read a lot on the site, you know. बोल रहे मैं बहुत देर तक बैठती थी रात को भी वेबसाइट में पढ़ते हुए, ज्ञान पढ़ती थी. All hours in the morning, 4 o'clock, 5 o'clock, I'd still be up. I didn't go to sleep yet. 4 बजे 5 बजे तक सुबह तक पढ़ते रहते थे. हाँ, 20 साल में बी के ज्ञान ने नहीं खींच पाया और एडवांस ज्ञान ने 2 साल के अंदर खींच लिया. Baba says that for 20 years you have been in the basic knowledge, but you have never felt like going to Mount Abu once, and in 2 years you have come here. Yeah. Well, I just know it was time. I had to do it, you know. बोले मुझे लगा कि अभी समय है, मुझे जाना ही चाहिए यहाँ पे. Because, when I came into the basic knowledge, I was at a crossroads in my life where I chose to go elsewhere instead of going to India because I was dealing with personal stuff, so I went there. And this time, I thought I still have that personal stuff to complete, but this time I want to do it right. I want to have the foundation strong in me before I deal with that other. बोल रहे बाबा जब वो बेसिक नॉलेज ली थी तब भी उनको एक दूसरा रास्ता था, पर्सनली कुछ कनेक्टेड दूसरा रास्ता था. तो वहाँ बेसिक में जाने का एक रास्ता था और उधर जाने का था,
लेकिन वो पर्सनल चीज में चले गए। और अभी भी जब एडवांस में आ रहे थे तब भी उनको वैसे ही हुआ, कुछ पर्सनल चीजें थी जहाँ जो उनको खींच रहा था, और एक रास्ता था कि इधर आ जाए। फिर उनको लगा कि ये पहले मुझे करना चाहिए, उसके बाद मैं उससे डील कर लूंगी। Yeah, I had to have that. I had to. Something kept telling me, do this first. कुछ मुझे मेरे अंदर कुछ बोल रहा था ऐसे कि ये पहले करो, तुम इसको पहले करो। Because I almost made plans to do deal with this other situation, and I just was holding back, and then this sort of came to me, do this first. So मैंने उनका जो पर्सनल प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने में वो लग गई थी, लेकिन उनके अंदर से कुछ उनको बार बार आ रहा था कि पहले ये करना है। उसके बाद I'm glad that मैं खुश हूँ कि मैं आई हूँ। I'm full, physically and subtly full. बोल रहे हो मैं एकदम भरपूर हो गई, सूक्ष्म रूप से भी और 20 घंटे बैठना पड़ेगा तो काफी हो जाए। वो बोल रहे सूक्ष्म रूप से भी और स्थूल रूप से भी मैं पूरा भरपूर हो गई। बाबा says you'll have to sit for 20 hours now. Oh, I know. The one sister was going to give me something, right? And I said, okay, but that's fine. She was gonna, but then I guess we left so fast that she didn't. Right? So I just said that's fine with me because I'm so full. Like I'm full on knowledge. I really am. Like I don't feel like I even need खाना to भी eat. खूब खिलाते हैं, पेट भी पूरा भर गया और ज्ञान से भी मेरा भर गया है, सूक्ष्म रूप से भी भर गई हूँ मैं ऐसे। I honestly don't feel I need to eat. I mean that. Like I'm really full. मुझे खाने की जरूरत नहीं है ऐसे लगता है, ज्यादा ही ज्ञान से ही भर गया पेट। Yeah. So it's good. So that's what I came for. So I came and I'm satisfied and. चले संतुष्ट हो गई।